Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone, all our brothers and sisters across the globe, wherever you are. We extend you a very warm welcome on Saturday, 11th of February 2023 at 9:15 p.m. Indian Standard Time. Today we have taken your special permission क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है, ये आप लोगों के लिए है, इसलिए आपसे अनुमति लेकर आज हम 9 बजे की बजाय 9:15 बजे यानी कि 9:15 पर इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं बिकॉज आई वॉज ट्रेवलिंग एंड आई हैव जस्ट रीच्ड एंड आई एम विद यू। और देखिए, ट्रैवल फिनिश करते ही पहुंचते ही आप लोगों के साथ हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। साक्षी आ गई हैं, विधि मैम आ गई हैं, इन दोनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। बाकी लोग भी जुड़ते जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि आज प्रोग्राम 9:15 बजे है। तो आइए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूथ की बात करते हैं, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातचीत करते हैं, हम डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चों की बातचीत करते हैं और हमारे पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में, हम वर्ल्ड में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में और इंडिया में जब बातचीत करते हैं तो ट्राइबल की जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल यूथ की, वी गॉट टू टेक देम इनटू कंसिडरेशन। अब ट्राइबल्स कौन है, इनकी क्या बैकग्राउंड है, इनके क्या नॉर्म्स हैं, इनकी आर्ट, इनकी क्राफ्ट, इनका कल्चर, इनकी कुजीन, इनके डांसेस, इनके म्यूजिक, इनके सोविनियर, इनकी फेस्टिविटीज, उन सब चीज को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो ट्राइबल यूथ के बारे में हम लोगों के गहराई में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ट्राइबल्स का एक अलग से पूरा जो है ब्यौरा दिया गया है, डिटेल्स दी गई हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे आपके साथ कि ट्राइबल यूथ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और ट्राइबल यूथ के लिए आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ट्राइबल्स आगे क्या क्या कर सकते हैं, उस चीज को हम लेकर चलेंगे। और हमारा विशेषकर जोर नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी होगा क्योंकि उस एरिया को काफी देर तक हम सब लोगों ने नेग्लेक्ट किया है, जिसकी वजह से अब उनका हाथ पकड़कर उनके साथ तेज चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम सब इकट्ठे आगे इस प्रयास में। और G20 भी भारत में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके अलग अलग वर्टिकल हैं। आपको पता है कि अभी 3 दिन का कार्यक्रम उनका रन ऑफ कच्छ में हुआ एंड दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ग्रुप फॉर द G20 फॉर टूरिज्म। उसी तरीके से एजुकेशन की जो G20 की मीटिंग है वो 1 और 2 फरवरी को चेन्नई में हुई थी। उसके बाद जो अगली मीटिंग है वो अमृतसर में है, उसके बाद आगे प्रोग्राम होंगे। और जून में एजुकेशन और स्किल की जो बातचीत है वो एजुकेशन के मिनिस्टर G20 के इकट्ठे मिलेंगे और काफी उसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो आइए, लेट्स प्रोसीड टुगेदर। सैटरडे 11th February 2023, Tribal Youth Empowerment on behalf of ICSI, International Chamber for Service Industry, because we are a link between the non-resident Indian diaspora, 32 million, 3 करोड़ 20 लाख लोग भारत से बाहर गए हुए हैं जो अलग अलग कार्यों में हैं, and they do so much to India, they do so much of empowerment to India. It's up to us, how do we involve them in our education, skills, MSME, startups, entrepreneurship, tourism, entertainment, wellness, services, exports, teacher training, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, हमारा चेंबर उसको लेके चल रहा है। So non-resident Indian and corporate houses in India and the government interface. So वसुधैव कुटुंबकम, प्रवासी भारतीय दिवस सभी को पता है, वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के भी अपने प्रवासी दिवस होते हैं। तो आइए हम ट्राइबल की बातचीत करते हैं। जब हम ट्राइबल की बातचीत कर रहे हैं, ट्राइबल यूथ की बातचीत कर रहे हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन की बातचीत कर रहे हैं, तो आप सबको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके की पॉपुलेशन कहां पर है, ट्राइबल कहां पर कितने परसेंट हैं। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिटेल में आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन 1991 का जो पिछला सेंसस हुआ था, उस सेंसस के अंदर अगर हम लेकर चलें तो मिजोरम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत के अंदर ट्राइबल की है, दैट इज 94.7%। तो ये आप सब लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मेघालय में तकरीबन हम लेकर चलते हैं तो 65.5% के करीब हमारी है। और उसी तरीके से अगर हम नागालैंड में लेकर चलते हैं
तो 87.7% है। माय सिंसियर अपॉलजीज। मेघालय की 85.5% है। नागालैंड की 87.7% है। अरुणाचल की 63.7% है। त्रिपुरा की 30.9% है। और अगर हम मणिपुर की लेकर चले तो 34.4% है। सिक्किम में ट्राइबल्स लेकर चले तो 22.4% है। एक आपने सुना होगा दादरा नागर हवेली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, वहां पर ट्राइबल की पॉपुलेशन 78.9% है। और अगर हम बाकी जगहों में देखकर चलें तो हिमाचल प्रदेश में जैसे लाहौल स्पीति है, जो ऊपर ठंडे इलाके हैं, जो बॉर्डर के साथ हैं बिल्कुल, उनमें जो ट्राइबल्स है दैट्स अबाउट 4.2%। उत्तर प्रदेश में लेकर चलें तो 10.2%। राजस्थान में लेकर हो तो 12.4%। मध्य प्रदेश में तकरीबन 23%। उड़ीसा में 22%। बिहार में 7%। वेस्ट बंगाल में हमारे 5%। आंध्र प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली 6%। उसके बाद अगर हम तमिलनाडु में आते हैं तो 1%, केरला 1%, कर्नाटका 4.3%, महाराष्ट्र 9.3%, गुजरात के अंदर 14.9%। उस तरीके से दमन एंड दीव को लेकर चले तो 11.5%, जो बिल्कुल गुजरात के साथ लगा हुआ है। और इस तरीके से हमारी ये पूरा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी हम बातचीत करते हैं, यूथ की भी बातचीत करते हैं, तो ट्राइबल की स्टेट वाइज जो ट्राइबल की पॉपुलेशन की परसेंटेज है, ये 1991 के सेंसस के हिसाब से सारी डिटेल्स हैं। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव जा रहा है। यू कैन सी इन योर ओन टाइम ऑल्सो, यू कैन एंजॉय एंड यू कैन वर्क ऑन टू इट। आगे चलते हैं। अब देखिए, इन ट्राइबल्स के लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज निकालती रहती है, कुछ चीजें इनके लिए व्यवस्था करती रहती है कि इन बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है। और अगर हम इंडिपेंडेंस से लेकर चलें तो आज तक बहुत सारी स्कीम्स हैं जो दी गई हैं। हमारा फोकस बेसिकली एजुकेशन पर है। हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो एजुकेशन पर, स्किल्स पर, यूथ पर, टीचर पर, कॉम्पिटेंसीज पर, इन बच्चों की एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हो, इन्हें रोजगार कैसे मिले। सो वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन दैट। सो सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस they have initiated several schemes and various programs to educate the country's tribal population. Now this includes various establishment जैसे आश्रम स्कूल्स हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, वोकेशनल ट्रेनिंग है। और इसी के साथ साथ पॉलिसी एनालिस्ट और एजुकेशनिस्ट जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ट्राइबल का एक कल्चर है, ट्राइबल की लैंग्वेज है, उनकी एक कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है, उनके लिए एक करिकुलम है, उनके लिए एक इनहेरेंट लर्निंग एबिलिटी है उन ट्राइबल बच्चों की। एंड वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि हम इन बच्चों को किस तरीके से अडॉप्ट करें सो दैट दे ऑल गेट क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो टू इंश्योर होलिस्टिक एजुकेशन फॉर आवर ट्राइबल यूथ। आगे आते हैं। अब टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप होता है। अगर एक किसी सिटी का जो टीचर है वो ट्राइबल बच्चों को हैंडल करता है तो मेनी अ टाइम दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, देयर वर्क प्रोफाइल एंड अदर थिंग्स। लेकिन अगर ट्राइबल बच्चों को ट्राइबल टीचर हैंडल करते हैं और उनका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अलग से होता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जैसे रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से ये सारी चीज को हम लोग कर सकते हैं। अब टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप की अगर बातचीत करें ट्राइबल के कॉन्टेक्स्ट में, तो कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइबल स्टूडेंट एंड देयर टीचर is one of the critical factors to promote meaningful learning in the classroom. बच्चे क्लास में क्या सीखते हैं वो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप पर डिपेंड करेगा। It is very important to understand that the tribal children do not have the same background as their non-tribal schoolmates or teachers have. तो जो लोग ट्राइबल्स के साथ डील कर रहे हैं उनको बहुत गहराई में इमोशनली, एम्पैथेटिकली सोचना होगा और समझना होगा how they have been deprived, how they have not gotten access to certain things, how do we bring them in the main fold, what exactly is the way of handling these tribal children. ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं और
because I have served in the armed forces also, and I have served in the tourism also, and I have traveled extensively to the tribal areas. ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ये लोग बहुत भावुक होते हैं, और ये किसी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं. अगर आप इनका दिल जीत लें, they can do anything for you. They are wonderful people. The only thing is they need healing touch. They need human touch. They need a special touch. Now, there is a need to respect the value of their culture, their traditions, their manners, their language, their cultural heritage. All that has to be taken into consideration while dealing with the tribal students. Excuse me. क्योंकि मैं ट्राइबल बच्चों के साथ बहुत क्लोजली डील करता रहा हूं, तो मैं हमेशा अपने टीचर्स को एक ही बात कहता हूं, यू मस्ट अंडरस्टैंड they come from a different background. You have to handle them very delicately. You have to handle them in a very sensitive way. You have to understand their emotions. You have to understand how are their expectations or their apprehensions, jo kuch bhi hai. Interestingly, many tribal cultures have positive elements. It should be the responsibility of the teacher and academic personnel बेसिकली कि किस तरीके से उनकी इंडिजिनियस नॉलेज को भी हम बचा के रखें, एंड एट द सेम टाइम जो ट्राइबल यूथ है उनको स्कूल्स और कॉलेज में किस तरीके से ट्रीट किया जाए. अब इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब एनईपी 2020 में भी आपने देखा है कि मदर टंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. सेम थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर ऑल्सो. आर्टिकल 350A जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट स्टेट्स दैट एवरी स्टेट must have adequate facilities to teach their children in mother tongue. जो मातृभाषा है उसको आगे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. The initial medium of instruction for the kids should be their mother tongue. They could then be gradually encouraged to learn the regional languages. देखिए, you got to understand them. You got to take them in your fold, and particularly when I'm talking about northeast part of India, उन लोगों को पहले हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब आई है, पहले हम लुक ईस्ट पॉलिसी करते रहे. उनका कोई रेल लिंक नहीं था, उनका कोई फ्लाइट का एविएशन का लिंकेज नहीं था, रोड लिंक प्रॉपर नहीं थे, ब्रिजेस नहीं थे. एंड ये तो सब कुछ अगर आप देखें पिछले 8 साल में कितना बदलाव आया है, कितना चेंज आया है. And the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and his command and his dedication, his devotion, उन्होंने मन तक भावनाओं को छुआ है नॉर्थ ईस्ट के, और महसूस किया है कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, उनको क्या चाहिए. उन बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन चाहिए. उन ट्राइबल बच्चों का एजेंडा क्या होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी डिफिकल्टीज क्या है, एंड हाउ डू वी हैव टू एंश्योर दैट द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एट द प्राइमरी स्टेज could increase better performance of these tribal students. अगर बचपन से ही उनको ठीक से हैंडल किया जाएगा, ठीक से उनको इमोशनली हैंडल किया जाएगा, अडेप्ट किया जाएगा, they can do wonders on this particular planet, and so much can be done wonderfully. मैं अभी आया हूं, तो आपकी परमिशन से साथ साथ चाय भी पीता जाऊंगा, because I traveled extensively and I've just. चलिए आगे चलते हैं. तो पहला पॉइंट था, we got to ensure that the proper instructions at the primary stage could increase better performance of the tribal students. दूसरी बात, some teachers assume that the tribal students are slow learners. That is wrong attitude. ऐसा नहीं है, ये slow learner नहीं है. आपको पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि उन सब ने वो महसूस नहीं किया हुआ, उनको नहीं पता. आपको you have to overcome the language barriers that require concentrated efforts. और जिन टीचर्स के पास पेशेंस है और जो ट्राइबल कल्चर को समझते हैं उनको, इसलिए we would make a humble appeal that the Northeast Council, the Ministry of Development of the Northeast region, they should do capacity building program of teachers, and at the same time there should be a special training, special capacity building, inspirational, motivational, and
जहां पर बच्चों की पर्सनालिटी का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, एटिकेट्स का, मैनर्स का, जेस्चर का, बॉडी लैंग्वेज का, एंड कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग का, कॉग्निटिव स्किल्स का, क्रिएटिव स्किल्स का, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करके प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम होने चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लिए। Now, development and printing of the textbook and syllabi, that should be decentralized. हर एक स्टेट को हम ये कहें और हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी हम ये कहें कि आप जैसा मटेरियल चाहते हैं जिससे बच्चे बेहतर सीख सकते हैं, एंड ट्राइबल चिल्ड्रन दे कैन लर्न फास्टर, बेटर, क्विकर, वी शुड अडॉप्ट दैट एंड वी शुड डिसेंट्रलाइज ऑल दैट. Now, learning materials, they should be prepared keeping in view the socio-cultural and socio-economic situations of the tribal people. सब लोगों की आर्थिक व्यवस्था, सब लोगों की economic independence, सब लोगों की क्षमता एक जैसी नहीं है. We got to handle very carefully कौन क्या afford कर सकता है, किसको किस तरीके से लेके चलना है. That all is very important which we have to understand. उसी तरीके से आपको बच्चों का पोटेंशियल समझना होगा, ट्राइबल लीडरशिप पर काम करना होगा, इन बच्चों को एम्पावर करना होगा, एनकरेज करना होगा, ट्राइबल बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा. And again I will tell you that Northeast India needs a special treatment. All ministries, of course, 10% of your budget you are keeping it for the Northeast. जितनी भी CSR activities हैं, corporate social responsibilities हैं, why don't we focus on Northeast? Why don't we focus on Northeast teachers? Why don't we focus on Northeast youth? Why don't we work on their capacity building? And we would like to make a humble appeal to the Ministry of Education, Government of India, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Ministry of Tourism, Government of India, and to the Honorable Prime Minister of India and Finance Minister of India. 5 साल के लिए टोटल फोकस दे दीजिए टीचर्स और यूथ के ऊपर नॉर्थ ईस्ट के. आई कैन वाउच फॉर इट. They will come in the mainstream of the country. हमारे टेलीविजन में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे न्यूज रीडर होने चाहिए, न्यूज कास्टर होने चाहिए, एंकर होने चाहिए. बहुत सारे बच्चे, जितने बड़े बड़े आपके कॉन्टेस्ट होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपके डांस का कंपटीशन है, सिंगिंग का कंपटीशन है, कोई और ऑडिशंस हो रहे हैं, why not the anchors should be from Northeast? They are very good at music, they are very good at entertainment industry, and they are very good at, अगर आप बैंड्स की बातचीत करें और म्यूजिक की बातचीत करें, I'm pretty sure that few days back you must have seen the Honorable Vice President of India had gone to Nagaland, and at the Hornbill Festival, one of the girl from Nagaland, she played the national anthem Jan Gan Man Adhinayak Jayo He on guitar, and it was so fabulous, it was so splendid. That's what is the talent of Northeast. Manipur ने अपने 50 साल कंप्लीट कर लिए हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के. They have celebrated their golden jubilee. So you got to understand what all is. लेकिन उसको कभी किसी ने दर्शाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं. उसी तरीके से if we come on to United Nations Children Fund, UNICEF, that had been promoting quality education and employability among marginalized children. उसी तरीके से UNICEF जो है, in collaboration with UNESCO, is supporting the Union Government of India to achieve quality education for all children between 6 and 14 years. That is something fantastic. Let's focus on that area. एक और स्कीम है जो फेसबुक के साथ है. अब देखिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और ये सब चीज की जब हम बातचीत करते हैं तो फेसबुक ने एक इनिशिएटिव लिया, and when they came to India, they realized it. They had gone to Ministry of Tribal Welfare, Government of India. एक स्कीम है गोल, that called Going Online as Leaders. अब आप इसको पढ़िए और मैं तब तक एक सिप जो है बढ़िया सी चाय की ले लेता हूं. Lovely. So goal क्या है? Going online as leaders. Now, going online as leader जो program है, it was launched by the Facebook in partnership with the Ministry of Tribal Affairs, Government of India on 15th May 2020 to digitally skill and empower 5,000 youth from tribal communities over the next 5 years. So 2020 में शुरू हुआ है, 2025 तक है, अभी 2023 का beginning है. The project aims to identify and mobilize 2,500 renowned people from the industry, which include policymakers and influencers, teachers,
artists, entrepreneurs, social workers, known for their achievement in their respective domain, to personally mentor the tribal youth across India. Ladies and gentlemen, we tell the Facebook right from this particular program, we would like to partner with them, we would like to help them, and we would like to focus on Northeast part of India. The 9-month program includes 7 months of the mentorship in the areas such as digital literacy, life skills, leadership, entrepreneurship, sector specific skills, followed by a 2 months internship for the mentees to gain on ground experience. It's a wonderful program by the Ministry of Tribal Welfare, Government of India. The people, those are watching this program, let's be a part of this unique mission. Our chamber ICSI extends its facilities, whatever we have got. We would love to partner with the Ministry of Tribal Welfare as well as the Facebook and its sister concerns to take this particular agenda for the entire Northeast region further. Let's proceed. And when we take it, the GOAL program is a completely digitally enabled program. This is with the Facebook, which we have already told you. It's by the Ministry of External Affairs, Government of India. Now the GOAL program, क्योंकि totally digital है, especially relevant during the COVID times. आपको याद होगा कोविड के टाइम के अंदर everything had gone digital. So leveraging the digital tools and platform for e-learning, interaction and monitoring, this initiative serves the leading objective of Digital India. The aim of the program is to empower the youth from the tribal communities to become village level digital leaders and entrepreneurs for their communities. This program is likely to ignite competitiveness of our tribal communities by offering them an opportunity to come forward and showcase their creative potential leveraging digital platform. It will also enhance their market linkages and further serve the purpose to make Indian economy Atmanirbhar by promoting local products and ensure participation of tribal youth in nation building. अभी आपको पता है कि one district, one product अभी आ गया, आपका बजट के अंदर अनाउंस भी हो गया. हर एक डिस्ट्रिक्ट की कोई यूनिकनेस है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की कोई स्पेशलिटी है, एंड हाउ दैट कैन बी एग्जिबिटेड एंड हाउ दैट कैन बी टेकन. इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था सबसे पहले 2020 के अंदर, तो मई के अंदर ये लॉन्च हुआ, लेकिन इसका एक पायलट प्रोजेक्ट पहले रन हुआ 100 ट्राइबल गर्ल्स के लिए, एंड इट वाज through the support of the 25 women leaders. It was spread across the 5 Indian states, Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Maharashtra. And it received an enthusiastic response, and it has got many success stories to its credit. अगर आप Ministry of Tribal Welfare की website पे जाएंगे, you can find out all that. The program had reached, in 2020, and it engaged with 46 MPs, 250 NGOs, and COEs, top tier educational institutions, and member of the state and bureaucracy by means of the webinar, video and endorsement, social media support, thus creating a strong pan-India reach. If you recall, during the pandemic, we have not taken a break even for one day, right from 25th of March 2020. Every day we have been doing number of webinars related to and focused on education, teachers, youth, competencies, capabilities. ये जो program है GOAL का by the Facebook with Ministry of Tribal Welfare, this program has also ensured that a structured governing committee be made to monitor and guide the program using various experiences. It contains the people from the government, from the academia, from the industry, with the presence of the stalwarts from the social organization like UNDP, United Nations Development Program, Niti Aayog, Art of Living, AIMS, Jodhpur, and many other organizations. The program, through its wide network of partners, it aims to ensure optimal reach of the initiative, thereby creating a holistic environment for the growth and the development of the tribal community. Ladies and gentlemen, we got to understand what are the schemes available and how to go by. How technology has truly come to the aid of the tribal youth. ये देखिए कोरोना के टाइम के अंदर, can you imagine जो डिजिटल लिटरेसी आई है, टीचर्स ने, कम्युनिटीज ने,
सोसाइटी ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और लाइफ स्किल्स भी आपको समझ आई हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये पता लगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कीप द चिल्ड्रन एट होम व्हेन दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल्स। एंटरप्रेन्योरशिप के नए नए वेंचर आए हैं, स्टार्टअप आ गए हैं, यूनिकॉर्न्स आ गए हैं, आर्ट एंड कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, देयर सो मेनी अदर एरियाज। द गोल प्रोग्राम इन इट्स फर्स्ट फेज, जो इन्होंने फर्स्ट फेज अपना किया, they have trained and improved the skill of 167 tribal youth across the country, and successful hone ke baad phase 1 ke now the goal 2.0 that is now aimed at upskilling and empowering 1 million women and youth across India. 1 million is 10 lakh. अब आप सोच लीजिए यूथ और टीचर्स को और विमेन को। वाओ! तो फेसबुक का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। वी आर रियली वेरी वेरी हैप्पी। और फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम है, उसके साथ व्हाट्सएप है, उसके साथ मैसेंजर है। देयर इज सो मच, एंड डू यू नो हाउ पावरफुल इट इज? जो व्हाट्सएप है, कैन यू बिलीव दैट जो फेसबुक है वो एक दिन के अंदर 3 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे शेयर देयर आइडियाज ऑन दैट। एंड अगर आप कहें तो 100 बिलियन मैसेजेस आर शेयर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एवरी डे। कितनी स्टोरीज, कितनी सक्सेस स्टोरीज, कितनी एक्टिविटीज, and more than 180 million businesses use Facebook to connect with the customer worldwide and expanding the business. Can you believe it? What all is there? Now, Facebook is a leading digital enabler in India, empowering people and leveraging the power of the technology and the grassroots. हमारे साथ NRIs भी जुड़े हुए हैं। अभी USA से प्रोफेसर विवेक शंकर नटराजन जी, who is our advisor, he is also watching this particular program and is really very happy that tribal बच्चों के लिए Facebook ने और Instagram ने और WhatsApp और Messenger के थ्रू और खासकर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। All that is being done is fantastic. You know, that is the way we got to think. ये देखिए आपको ट्राइबल वेलफेयर के पूरे और किस तरीके से पॉलिसी को फ्रेम किया गया है और किस तरीके से फोकस किया गया है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर, while keeping the children and the teachers in perspective. Now, tribal जो डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं, they have been advocating the need for participation and sensitization of the community people. और ये आपको सबको पता लगा होगा कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और फॉर दैट मैटर इवन इंडिया में, ड्रॉप आउट रेट। The other day I was talking to one of the officer in the NIOS. उन्होंने कहा कि जितने भी ड्रॉप आउट हैं, one of the challenge which our chamber is working on to at this point of time, there should not be a single student dropping out in northeast part of India. We are just focusing and we are thinking on those things. Why can't we work out something? Now, the initial medium of instruction, वो हमने बात किया कि मदर के लिए बच्चों का जो है वो मदर टंग में होना चाहिए। That is something very important. ये केस स्टडी था मध्य प्रदेश, इसका महाराष्ट्र का, कि how they have worked on to it and the complete profile they have given. ये केस स्टडी गूगल पर अवेलेबल है. You must go through. You will understand that how they have tackled the tribals. These are beautiful kids, the children from Nagaland, wonderful kids from Nagaland, and these are also people from Nagaland, and then I go to Meghalaya. मेघालय में आपके खासी भी हैं, गारो हिल भी है, और जो है जंतियास भी हैं, बाकी सब लोग भी हैं। मेघालय की यूथ also very talented, and after Nagaland, when I come to Meghalaya, I find over here their culture, their art, their craft. Nehu, Northeast Hill University is also located over there, and our advisor to the chamber, ICSI, Mr. Tyrone D. Brass, he's also from Meghalaya. We are proud of him, and he puts in so much of efforts. और मेघालय के अंदर एक विलेज है जहां पर किसी बच्चे का नाम नहीं है। वहां पर विसिल से, सिर्फ विसिल से मदर जो है बच्चे को बुलाती है। वो विसिलिंग किस तरीके से होती है, कितने ड्यूरेशन की होती है, दैट इज एन आर्ट। कैन यू इमेजिन द एंटायर विलेज इज बेस्ड ऑन विस्लिंग ओनली। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, very dear to my heart because my first army posting, and when I went over there, met the people, such a warm people, such a nice people, such a dignified and a cultured people. So much of warmth travels through Arunachal Pradesh. It's fantastic when I talk about it, and these people are so beautiful. Now I'm going to share some of the
the schemes which are there by the various ministries. And you can see it over here, Ministry of Tribal Welfare, what all they are offering to children. Then there is a Directorate of Tourism Maharashtra, similar way Ministry of Tourism. And then of course, this is another scheme of Ministry of Tribal Welfare. Then there is a Aspire Meghalaya and Government of Meghalaya and funded by Ministry of Tribal Welfare. Meghalaya का भी एक बड़ा अच्छा initiative है, how this is being done. Aspire Meghalaya program है, Ministry of Tribal Welfare ने support किया है. उसी तरीके से जो मैंने आपसे गोल की बातचीत की, that is Ministry of Tribal Welfare with the Facebook, they have done wonderful. और उसके अलावा North East Council की हमने बातचीत की for the benefit of those people, those are not deeply associated with North East. जो North East Council है, when India got independence, throughout India there were different councils were being made, but it is only North East the council which is active, which is vibrant, which is innovative, and which is really relevant today. So North East Council जो है, they have also got various programs being offered. It is located in Shillong, that is the capital of Meghalaya. फिर उसी तरीके से ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड जो है, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस INI की बात करते हैं, तो दे हैव आल्सो गॉट, एंड ऑन द रिसर्च आल्सो देयर इज अ लॉट बीइंग डन. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ट्राइबल्स के लिए. नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का एक और प्रोग्राम है NGO का. Those are seeking the grant from the Northeast Council on capacity building. This is our chamber's homepage. We are totally dedicated with youth and teachers. We are proud of our patron, Padma Bhushan, Professor Jagdish and Shethji from United States, and our president, Shri Anil Manocha ji from Singapore. Ladies and gentlemen, this web portal itself is such a big, voluminous, kind of information available. ICSIindia.in. When you come on this particular web portal, अभी आप देखिए pandemic के बाद में, we have come out with the book Rethinking Tourism Post-Pandemic, and you can download. It's free of cost. If you are teacher, educator, counselor, technocrat, travel agent, tour operator, tourist transporter, tourist guide, anybody who is related to tourism, you get a free membership from our chamber under FEAST. That's a forum of educators and skill providers of tourism. And this is available to anybody who is directly or indirectly associated. You can come over here. And at the same time, if you come on this web portal, you will come to know how ICSI is giving you the international linkages with the Woodbury University in USA. I want more and more children should do short-term training program, long-term training program, management programs, futuristic programs, online programs. With the Woodbury University, we will give you all kinds of facilities, and that is learning, doing, succeeding. And that part also we will take into consideration. We will work on too. Abhi, before pandemic, we had finishing school that was brick and mortar, एक proper ground पे जैसे infrastructure होता है. But post pandemic, we have realized that the digital technology is going to play a more important role. So in the 21st century, ladies and gentlemen, post pandemic, ICSI, International Chamber for Service Industry, has come for you with the Digital Inspirational Lab. Let us empower our tribal youth, bring them at par with the others in the mainstream of the country. Let's work on their curiosity, creativity, imagination, innovation, design thinking, critical thinking, adaptive learning, immersive learning, project-based learning, technology adoption learning, exploring and experimental-based learning, joyful learning, and empathy in education-based learning. That all we have got in Digital Inspirational Lab of ours. It is for mental wellness, physical wellness, professional wellness, social wellness, economic wellness, environmental wellness, because our aim is there is a purpose of education. ICSI is for value addition in the tribal services. You should get inspired from the global tribal educator through various success stories, what they have got to share with all of us. What is the way forward? This is something very interesting. Stand up, get up, walk, hold my hand. Let's move forward. इकट्ठे हाथों में हाथ लेके चलते हैं. ये देखिए, आपको नजर आ रहा है, आगे आपको लग रहा होगा धुंध है, फॉग है, फॉगी वेदर है. ये फॉग क्लियर होती जाएगी जब आप आगे बढ़ते जाएंगे. Always believe something wonderful is about to happen.
Now, what is the way forward? What do we recommend from our chamber side to various ministries, Northeast Council, various state governments, and all these states, those have got tribal population? Number one, it is the pressing time to consider holistic tribal education and their inclusive growth, which has to be done. There is a pressing need for collaboration and strategic, partnership between the government, policymaker, civil society, educators, trainers, mentors, and international development institutions to collectively put efforts to address the chronic problem and allocate the adequate funds from the center and the state budgets, for tribal education, capacity building of tribal teachers, capacity building and motivational and inspirational and overall grooming of tribal youth. At the same time, we got to work out how do we give equal access and equal opportunities that should be given to the tribal children to empower them throughout India. Tribal communities will have to be elevated economically and educationally for promotion of a socio-economically integrated, healthy society in the remote pockets, which we have to take into consideration. Ladies and gentlemen, if we all are together, if we put our hearts, our minds, our souls, our spirit together, one thing very important, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. Let's come together to empower tribal youth, tribal teachers, tribal educators. Let's make their education and skills relevant. With this, we have finished 1,813 webinars, having started on 25th of March 2020. Today's webinar, very specially, we dedicated to our tribal youth and our tribal teachers. Wherever you are, we are with you. We would love to support you. We will take your request to the Northeast Council in Shillong. We will take to respective state governments. We will take to the Ministry of Donor, the development of the Northeast region, Ministry of Tribal Welfare. Instead of spreading resources and the allocations too thin on various projects, it is much better that we should have a focused approach, concentrated dose where we should empower the youth and we should develop them so that either they become entrepreneurs or they take an employment, but they should not be roaming around free. At the same time, they should not become dropouts. Those are dropouts. We would make a humble request to you. It's never late in life. Come to the NIOS, National, the open school, what we have got. Take admission over there. I'm pretty sure you can be a success story. Once you cross the barrier of 12th, then you do your graduation. Now education has become so interesting. Everything is available on your mobile phone. Everything is available. It is a click away and you can enjoy. You can go on the YouTube, you can go on the Facebook, you can go on Instagram. You can post your own views wherever you feel like. Let's come together. Let's develop the entire vision together. I'm pretty sure all of us, we can do a lot together. Collective efforts. एक शेर आपको याद होगा, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया. The CSR, the initiatives and other NGOs, they will also come forward. I'm pretty sure. और CSC भी बहुत अच्छा रोल कर रही है because they just had a very, very big summit in Delhi, and Mr. Rishikesh Patankar, the CEO of the education vertical of the CSC, along with other stakeholders, they had a wonderful program in India Habitat Center. It was a proud privilege to be a part of that. May God bless them. May God give them further strength and support, and they should keep growing and inspiring. You got to understand, jo CSR ka 2% hai, why it can't be developed or why it can't be utilized, why it can't be strategically channelized in the Northeast part of India. Our chamber would be more than happy to help every child, every teacher. Come on, let's get together. Let's move together. Let's walk together. Let's take the agenda together. And the day is not very far when the sun will rise in Dong village of Arunachal Pradesh in the early morning hours, and none of the youth
will be a dropout. None of the youth will be unskilled, and none of the youth will be without employment or entrepreneurship. You can be a startup of your own life. Let's walk together. Let's move together, all of us together, from our digital inspirational lab of the ICSI. We extend you a very warm welcome. And tomorrow you have got Sunday. Sunday we have got 3 programs, but tomorrow we have got 4 programs for you. First program is going to be at 9:30 in the morning on ICSI India YouTube channel. It will come live from California. And tomorrow you will have music therapy for education and beyond education and skills. That's at 9:30 in the morning. 4 o'clock, we will take you to Dubai with Mr. Arpit Duggar. You will have a digital tools and a digital technology for education. Then we have to take care of your health also. Ayurveda for the global wellness. Tomorrow evening at 7 p.m., we'll have a special program for you coming with Dr. Parmeshwar Arora. And thereafter, last program will be at 8 p.m. with the non-resident Indians from Canada. They will be coming, Canada calling. We will go legal way. We'll go dignified way. We will go skilled way. We will go positive way, because the world needs Indians. Vasudhaiv Kutumbakam. With these words, thank you very much for joining us today. Look forward meeting you tomorrow. तब तक के लिए आपसे इजाजत. धन्यवाद. नमस्कार.